Good morning, class 7. So, today we are going to read chapter 3 of Moral Science. Reading is a good habit. Now, no entertainment is as expensive as reading, nor any pleasure so lasting. तो reading की तरह कोई भी entertainment उतना expensive नहीं है, उतना pleasure giving नहीं है. Said a famous thinker, reading makes a person wise and knowledgeable. इसको wise और knowledgeable भी बनाते हैं. Bacon said very lightly in his famous lines that reading makes a full man. Speaking a ready man, the happy medium is reached when a man reads enough to give value to what he has to say. तो reading से ही सब कुछ मिलते हैं. Reading gives us everything. For general improvement of oneself, a person should read whatever he is interested in, and he should inculcate a habit of spend his time with the books. So general improvement के लिए सभी को रीडिंग करना जरूरी है. कोई भी बुक्स पढ़ो, कोई भी स्टोरी बुक्स पढ़ो. And he should inculcate a habit. उसको habit होना चाहिए books पढ़ने का. If we read books regularly on the subject that interests us most, we will have a thorough knowledge on that subject. तो different subjects are there. कोई भी subject के ऊपर अगर तुम book पढ़ते ही रहोगे तो उस subject के ऊपर तुम्हारा knowledge और भी बढ़ जाएंगे. Our impressions will become stronger. Our concepts will become crystal clear. तो एकदम क्लियर हो जाएंगे हम लोगों के कंसेप्ट, हम लोगों के इंप्रेशन भी स्ट्रॉन्गर होंगे. समटाइम्स इवन इफ वी बिगिन रीडिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ द बुक, वी विल फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग देयर एंड वी कैन कैरी ऑन विद दैट विदाउट गोइंग टू द बिगिनिंग ऑफ द बुक. अचानक अगर कोई मिड ऑफ द बुक से पढ़ना शुरू करे, वहीं पे अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिल जाए तो बिगिनिंग ऑफ द बुक से पढ़ने का जरूरी भी नहीं है. This is beneficial because the beginning may not sustain our interest and attention. It is well to read everything of something and something of everything. तो सब कुछ ही पढ़ना है. There are 4 kinds of readers. The first is like the hourglass, and their reading runs in and runs out and leaves no impressions or even a hint of the matter that they have been going through. It keeps draining out because there is no attempt to retain it. तो क्या बोल रहे थे? फर्स्ट इज लाइक द आवर ग्लास. तो आवर ग्लास की तरह है. देयर रीडिंग रन्स इन एंड रन्स आउट और कोई इंप्रेशन लीव्स नहीं करते और इवन अ हिंट ऑफ मैटर दैट दे हैव बीन गोइंग थ्रू, या फिर क्या चीज पढ़ रहे हैं उसका कुछ हिंट भी नहीं मिल रहा है. The second is like the sponge which imbibes everything and retains it fully, even the unwanted. दूसरा चीज है कि स्पॉन्ज की तरह सब कुछ तुम्हारे अंदर चले जा रहा है, तुम चाहो या ना चाहो. A third is like jelly bag throwing out the pure and retain the refuse, which means such a reader seldom benefits by his reading. He adds undesirable bits of his knowledge. And the fourth is like the worker of a diamond mine, जो कास्ट करते हैं साइड द रॉक्स दैट आर वर्थलेस एंड रिटेन्स ओनली द प्योर जेम्स. तो जो सारे वर्थलेस चीज है उसको साइड पे रख रहे हैं और सिर्फ प्योर चीज को ही अपने अंदर ले रहे हैं. सो वन शुड बी अ रीडर of the fourth kind if he or she wants to become a complete person. One should read good books. Books are good companions. Books तो good companions है, वो हम लोगों को भी पता है. They give us all that we cannot find elsewhere. Books have got stories, autobiographies, poetry, philosophy, science and knowledge of every kind. सभी kind के books होते हैं. Books can keep us occupied for hours or end together and increase our knowledge. ये हम लोग के knowledge भी increase कर सकते हैं. Now, what kind of books should we read? Books of our immediate interest related to our studies should be the foremost selections of students. Books that reinforce and expand your knowledge should come next. General reading should include. General reading में क्या क्या include होना चाहिए? History, culture and religion. This kind of books makes us understand the society around us. They enable us to interpret the present achievements of the society better. Now, books or religion ये help करते हैं form our moral character and learn about various religious things.
The life histories of the great men inspires and motivate us. तो हम लोगों को इंस्पायर करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं. We can learn some valuable lessons from their lives, and good references can be found about great men in such books. तो ये सारे books में good references भी मिलते हैं great men के. So today up to this, next day we will continue the chapter. Thank you.